Hello guys, I'm back here with a new topic and today's topic's name is animal shelter. Okay? So for 3 or 4 classes we have been studying animal world, and we are exploring different realms and fields of animals involvement and their activity. So this new topic is for animals chapter. तो आज का जो टॉपिक है वो है एनिमल्स के शेल्टर को लेकर, वो कहाँ रहते हैं उस टॉपिक पर हम आज बात करने वाले हैं. ओके, सो टू एक्सप्लोर फर्दर आई हैव टू slide the slide, so please be with me with complete focus, and you have to be in learning mode. That's the prime mandatory condition to learn something from my class. Okay, so I'm going to move further and see what we are going to see next. Okay, so our shelter, hamara ghar. Yes, as you all know that we all are human beings, and you have seen that we have created so many beautiful places to live in or to live on. है ना? आप लोगों को पता है कि हम सब इंसान हैं और वी आर वेरी इंटेलिजेंट, यू नो, वी हैव वेरी डेवलप्ड ब्रेन. हमारे पास बहुत ही विकसित दिमाग है, हम बहुत दिमाग वाले हैं, इंटेलिजेंट हैं. And because of that we have created so many beautiful places to live in, and also we have created so many comforts and convenience to make our life better. और जिसकी वजह से हमने बहुत ही सुंदर सुंदर जगहें रहने के लायक बनाई हैं, रहने के लिए बनाई हैं, और वहाँ पर हमने बहुत सारी आरामदायक चीज़ें भी रखी हुई हैं. तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि हियर इज़ अ हाउस. यस, सो आवर शेल्टर इज़ हाउस. हम जहाँ रहते हैं, हमारा जो शेल्टर है वो हमारा हाउस होता है. ठीक है, इस हाउस में हम रहते हैं. यस, और इस हाउस में बहुत तरह की सुविधाएं होती हैं. यस, सो वी ऑल ह्यूमन बीइंग्स लिव इन हाउसेस दैट वी हैव मेड. यस, बट अब हमारी तरह ही बहुत सारे क्रीचर्स इस धरती पर रहते हैं. ओके, लाइक अस देयर आर सो मेनी क्रीचर्स हु लिव इन आवर प्लैनेट इन दिस अर्थ. यस, सो व्हाट आर देयर प्लेसेस कॉल्ड? तो हम जहां रहते हैं उसको हम घर कहते हैं, बट व्हाट आर द प्लेसेस कॉल्ड वेयर अदर एनिमल्स लिव? लेकिन जहां पर दूसरे एनिमल्स रहते हैं, क्या उनके भी कुछ नाम हैं? यस, दे डू हैव देयर नेम्स. उनके भी नाम है, एंड दैट वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर टुडे. और हम उसी की जानकारी आज लेने वाले हैं. ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो द एनिमल्स शेल्टर्स नेम. तो हमारे लिए बहुत जरूरी होगा और अच्छा भी होगा कि हम उनके रहने के स्थानों को जाने, उनके नामों को जाने. ओके, सो टू नो दैट लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट स्लाइड. एंड शेल्टर ऑफ आवर एनिमल फ्रेंड्स. तो हमारे जो जानवर, जो दोस्त हैं, उनके शेल्टर्स को हम क्या कहते हैं? लेट्स एक्सप्लोर इट फर्दर. ओके, सो नाउ in the first slide, in this slide you can see there are 4 animals. I have chosen just 4, but there may be many animals. मैंने यहाँ पर केवल 4 पिक्चर्स जस्ट सिंबलिज्म के लिए रखे हैं, बट देयर मे बी मैनी एनिमल्स. बहुत सारे एनिमल्स हो सकते हैं, इनको देख के आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि कौन कौन से एनिमल्स इस ग्रुप में आ सकते हैं. सो इन दिस स्लाइड आई हैव गॉट अ टाइगर, a fox, a bear, and a lion. Yes, they all are wild animals. Yes, they all belong to jungle, forest, wild. And in the wild, where do they live? इस जंगल में ये रहते कहाँ हैं? So all these animals basically or most primarily they live in cave और डेन. ठीक है, जिसको हम केव कहते हैं. केव गुफा या फिर डेन मांद. यस, सो ऑल दीज एनिमल्स लाइक लायन, फॉक्स, बेयर एंड लायन लिव इन केव और डेन. सो दिस गुफा इज कॉल्ड केव और den. Yes, so all these wild animals that I have mentioned here in this slide live in cave or den. So their shelter is called cave or den. Okay, so remember this thing guys. Now
I'm moving to the next slide. And in this slide, I have got three creatures. The first creature is frog, second is crocodile, and third is hippopotamus. Yes, so I've got three animals: frog, crocodile, and hippopotamus. And you can see that where these animals live. Yes, what is their shelter? ये कहाँ रहते हैं? What is their shelter? ये जो रहते हैं उनका नाम क्या है? So most importantly and basically they live in river. Yes, frog lives in river, crocodile and hippopotamus lives in river. Yes, okay. But along with river, they also live in land. Yes, they also live in land. LAND, लैंड. लैंड मीन्स होता है जमीन. तो आप लोगों को ये पता है कि ये जो फ्रॉग, क्रोकोडाइल एंड हिप्पोपोटेमस है, इन्हें पानी बहुत पसंद है. दे ऑल लाइक वाटर वेरी मच. बट वो केवल पानी में ही नहीं रहते. दे ऑल्सो बिलोंग टू लैंड. दे ऑल्सो लिव इन लैंड. तो वो जमीन और रिवर दोनों जगहों पर ये एनिमल्स रहते हैं. ओके गाइज, सो लेट मी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. Yes, so in this third slide, I have got the only animal which is monkey. Okay, and you know that monkey is very naughty animal, and we all know that it lives on tree. Yes, so it lives on tree. On tree branches, they live and they do their all works. Yeah, they enjoy, they eat, they sleep. Yes, they do everything on tree. Sometimes, very sometimes, okay, they come down on the land and do something, and again they went on up on the tree and live there because tree is a safe place for them. Yes, so monkey lives on tree. So monkey shelter is tree. So what is the name of monkey shelter? Tree. Yes, okay. So in this slide you can see there are 6 animals. Yes, and all these animals are domestic animals. If you see it, there is goat, horse, sheep, hen, pig, cow. So I've got goat, horse, sheep, hen, cow and pig. You can see that all these animals are domestic animals. We keep these animals for our household work. Yes, we keep this for milk, we keep this for meat, we keep this for egg, we keep this for transportation. Yes, we keep them in our house to use them. Yes, to have some use of them. Yes, so all these animals, for all these animals we create these kind of houses. ठीक है, तो हम इन सारे एनिमल्स के लिए अलग से रहने के लिए कुछ जगह बनाते हैं अपने घर में. यू ऑल हैव गॉट दी आइडियाज गाइज. आप लोगों ने देखा होगा ना, आप सबके यहाँ गाय होंगी, बकरियां होंगी, तो उन्हें हम कहाँ रखते हैं? तो उनके लिए हम स्पेशल जगह बनाते हैं. एंड दीज स्पेशल प्लेसेस आर कॉल्ड बार्न. BARN, बार्न, या फिर स्टेबल. स्टेबल. सो ऑल दीज काइंड ऑफ एनिमल्स लिव इन बार्न और स्टेबल. तो ये कहाँ रहते हैं? इनके रहने वाली जगह को हम क्या कहते हैं? इसके शेल्टर को क्या कहते हैं हम? बार्न और स्टेबल. यस, देयर आर सो मेनी अदर्स नेम्स, स्टाई, टाई, ओके, बट बार्न एंड स्टेबल आर दी वेरी कॉमन नेम्स फॉर देयर शेल्टर. यस, okay, so let's move on to the next slide, and here we have got 3 animals: rabbit, mouse and snake. So have you got any idea that what can be their shelter? Yes, so here in this picture you can see there is a burrow. burrow or hole, छेद या फिर burrow, bill. Yes, so bill. तो rabbit, mouse and snakes very commonly found or live in burrow और hole. ये ज़्यादातर छेद में, जो कि जमीन में बने होते हैं, बड़े बड़े गड्ढे, छेद, या फिर बिल. ये देख रहे हैं पिक्चर में, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज अ बरो, दिस इज अ पिक्चर ऑफ बरो. तो ये ज़्यादातर ऐसी जगहों में मिट्टी के अंदर अपना सुरंग बना कर रहते हैं. यस, सो ये सुरंग में रहते हैं, बिल में रहते हैं. सो ऑल दीज एनिमल्स शेल्टर्स नेम
is burrow or hole. Yes, keep this in your mind, guys. Okay. Now, next creature is spider. Yes, and you all know that where the spider is found. Yes, in the spider web. So its shelter is called web. So spider lives on web. So spider's shelter is called web. Jal. Jal. Have you all heard about makdi ka jal? Or you all have seen it. It is very commonly found in our house. Yes, everywhere on the corner. Yes, in the dilapidated house or isolated house, this web is commonly found. And this spider is commonly found. Yes. So spider's shelter name is web. Next tiny creature is bee, madhumakhi, bee, and bee shelter is called beehive. Yes, hive. You can see the structure. आप लोगों ने देखा होगा. You have already seen bees shelter. This is called beehive, and in the beehive we get what? Honey. Yes, all the honey these bees store in their beehives. Yes, so beehive is actually a storage house for honey, and also it gives shelter to bees. Yes, so it also helps the bees larva to develop there. Yes, तो ये उनके पूरे फैमिली को विकसित होने के लिए जगह देती है. एंड दिस इज कॉल्ड बी हाइव. Hive, beehive. Yes. Okay, so in next slide I've got crow, sparrow, and parrot. You can see all these are birds. Yes, these all are birds. Crow, sparrow, and parrot. These all are birds. So when we talk about birds, everybody knows that they live on tree. So birds basically live on tree, but on the tree they make nest. Yes, so first shelter is tree for them. The second shelter is nest. Yes, because on the tree they make nest, and in the nest they give their eggs. They lay their eggs. Yes, so they make nest. Yes, but when we keep animal or any bird in our house like parrot. Yes, parrot, if that is in wild, it lives on tree or makes nest or tree hole. But when we keep parrot in our house, then they live in cage. ठीक है, तो जानवर जब जंगलों में रहते हैं सो उस समय वो ट्री में और नेस्ट में रहते हैं, बट जब हम उन्हें घर ले आते हैं तो हम उनके लिए केज लाते हैं. केज. केज मीन्स दिस पिंजरा. यस, यू ऑल नो दैट वेयर वी कीप आवर पैरट्स. वी कीप आवर पैरट्स इन केज. यस, सो पिंजरे में रखते हैं. सो अगर घर में है तो इनका शेल्टर क्या होगा? केज. यस, सो ऑल दीज बर्ड्स लिव इन नेस्ट, ट्री और केज अकॉर्डिंग टू द प्लेस वेयर दे आर at that particular time. Okay, so now next animal is dog. Yes, as I told you that dog is a pet animal and it's commonly found in our house. Yes, many houses are in many houses these dogs are found because dogs are very lovable animals. Yes, they are very honest and lovable animals. Yes, so these dogs live in kennels. यस, बहुत जगहों में डॉग्स के रहने के लिए स्पेशली एक छोटा सा लकड़ी का घर बनाते हैं. यस, स्पेशली इन फॉरेन्स. सो दैट इज कॉल्ड कैनल. कैनल. यस, यू कैन सी दिस. यस, डॉग शेल्टर इज कॉल्ड कैनल. यस, कैनल. ओके, सो डॉग शेल्टर्स नेम इज कैनल. ओके, द नेक्स्ट स्लाइड आई हैव गॉट ऑक्टोपस, whale, and shark. In this slide I have got octopus, whale, and shark. Yes, you all can see that these animals are water animals, and especially when we talk about water, they don't live in river or pond. Okay, they live in sea, in salt water. So their shelter's name is sea. You can see seas are the largest water bodies available on our planet. They contain most of the water that is available in our planet. Yes, and that is called sea. So octopus, whale, and shark, they all are found in sea, and in the sea
we have got salt water, वहाँ का पानी बहुत नमकीन होता है, and these animals always live in salt water. They can't live in fresh water. Yes. Okay, so it is the last slide, and in this last slide I have got ant and snake. Yes, so ant and snake sometimes live in ant hill. ये ऐसा एक बाम्बी बनता है, भूड़ू बोलते हैं ना जिसको, बाम्बी. ओके, सो दिस एंट एंड स्नेक sometimes use this bambi. Yes, ants especially make this ant hill. Okay, and this is called ant hill. Yes, these ants make for themselves this ant hill, and there they live. And when ants leave that place, snakes also use that ant hill to live in. Yes, so sometimes snakes and ant live in ant hill, and snakes sometimes also live in hole or burrow. Okay, but ant always lives in ant hill. Yes, so ant's shelter is called ant hill. Ant hill. So we saw different animals and their shelters. I am just running it in fast forward to give you some more rapid revision of that. Yes, here I've got the first slide. Tiger, fox, bear, lion, they all live in cave or den. So their shelter name is cave or den. Okay, frog, crocodile, and hippopotamus, their shelter's name is river. Monkey's shelter is tree. Goat, horse, sheep, hen, cow, and pigs, their shelter is barn or stable. Yes. Rabbit, mouse, or snake's shelters are hole or burrow. Spider's shelter is web. Bee's shelter is beehive. Crow, sparrows, parrot's shelter is nest or tree or cage sometimes. Dog's shelter is kennel. Octopus, whale, and shark's shelter is sea. Ant and snake's shelter is ant hill. Yes, so guys, I'm stopping here this class because this, if I take the assessment part also in this video, it will get long and it will make you bored. So we are going to do the assessment part in the next video. Okay, so in this part I'm just giving you the introduction and presentation part of this animal shelter theme. Okay, so watch this video, keep these things in your mind and practice it more and more to remember their shelter's name. This is very important. And in the next video I am going to start it with assessment, and there will test ourselves that how much we have learned from the first video, from this video. Okay, so in the next video we would do the assessment part of this. Okay, so I'm just stopping this video right now. So I'll be seeing you in the next assessment part video of this animal shelter theme. Okay guys, so bye bye.